Welcome everyone. Welcome to another episode of QHSE Concepts. And in this concepts, we are bringing you a lot of welding entity and quality control and quality assurance related subjects. So today I am back with another chapter of CSWIP 3.1 welding inspectors course. And I have selected chapter 3. I will let go of the chapter 2 because chapter 2 is much to do with only definitions and terms, which you can just read, and it's just terms and definitions. So it's very important to do that definitions, because whenever you will be talking in technical terms, you will be using those definitions, and it will help you a lot, and it will help other people understand what you're talking about. So do that chapter very carefully. So before starting the lecture, I will just take God's name, Shri Ganesha and Bismillahir Rahmanir Rahim. And people who are having their own follow religious and non-religious can chant their name before we start. It is better to always do that. It shows very good culture, and it shows that focus, and it will help mental satisfaction and health. So let's start the chapter 3, welding imperfections and material inspections. So let's go through the chapter of what is shown by CSWIP as mandatory that you should learn, and the exams are conducted on that topic. Made it a little bit bigger than this, a little bit. I think I can hope everyone can see this screen. Let me check once the recording is going on. I think I'll just check once more. Yeah, so screen is recording. Let's go back to the sharing. So definition, as per ISO 6520-1, so another standard to remember. 6520-1, imperfection, any deviation from the ideal weld. So imperfection, when you call, I saw an imperfection today on the welding joint. So imperfection means, okay, any deviation from the ideal welding joint is called as imperfection. Defect, any unacceptable imperfection is called as defect. So you will be talking in terms of imperfections, defects. You will come to your boss, or you will come to your supervisor or QC engineer and say, I saw a defect and I need to do inspection more closely. Can you help me? So as soon as you say defect, he will understand that you are talking about an unacceptable imperfection. So in your mind, you already know what you're talking about when you're talking with your senior or when you're talking to the welder. So in your report also, you can use these words, imperfection, defect. So try to be more technical as possible, because here we are learning this so that it will help in our career and our company wherever we work. So classifications of imperfections as per 6520-1, that they have classified this because all cannot be the same imperfections. So there are different kinds of imperfections and defects, and you will see as we go in this chapter and how detailed it is. So cracks, cavities. Cavities are basically voids. Like inside you can see when you encounter any object, and when you start cutting it, you can see that there are many gas pockets or something like that. So these cavities are like, when you see the tooth cavity, that means there is a hole inside. So that explanation is general English. So solid inclusion. Solid inclusion is something which is inside the item, embedded. So you can understand like seeds inside the apple. They are the solid inclusion. If you want to understand that the apple is like a metallic object, then the seed is the solid inclusion. Then lack of fusion and penetration. So lack of fusion and penetration when the welding is happening. That time, if the fusion of the welding joint is not done properly, then you will see a straight line, or you will see the part of the bevel or part of the the steel is not melted properly. So that is a lack of fusion and penetration. Penetration, you will see when the root is not penetrated properly. So this penetration problem will occur generally in the root side.
So imperfect shape and dimensions. So the imperfection in the welding, the proper bead shape and all is not proper, then you can use that word as technical term. Then miscellaneous imperfections, then there are various kinds of imperfections, like as we go you will encounter. So it is important that imperfection is correctly defined, identified, so that it cause be established and actions can be taken to further. So we are identifying this in our report so that further welding supervisor, like welding foreman or our the QC along the way can make sure that those repairs are removed. Let's see what is crack and how it is defined, and how it is typographed, and what are the mitigative actions, how it happens and all that. So this is going to be very important chapter in CSWIP. CSWIP gives a lot of credence to welding imperfections, and then definitions, terms, and terms. So you need to remember all this very nicely, not only for the examination point of view, but also when you enter your career, you need to use these these words, and you need to remember this. That is why I always recommend every welding inspector need to go back to his CSWIP course notes at least once a year, so that this is properly in his mind. Because when you give not only when you work, but when you go and give interview, you need to know the proper way, structured way to answer the question, and that can only happen if you are in touch with your course notes. Okay, so there are imperfection produced by local rupture of the solid state, which may arise from effect of cooling or stresses. So as you know, welding we are doing on the metallic steel, and usually it is when we are doing welding, when we are doing fit up, there are so many stresses involved in this, and then those can produce unsavory results like crack. They are very rare to happen these days. I can say before 90s, or it used to happen a little bit with more frequency. It also depends where you are, in which industry you are. If you are in a running plant, trying to see the corrosion kind of environment, then naturally you will see this. And if you are in the let's say ship repair, where I was working for at least 5 years, I used to see this very, very frequently, because old ships used to come, and we used to change the panels, or let's say the steel plates, or we used to change the pipes. Very frequently we used to see this. So in the new industry, where we are doing the new building or fabrication of new items, where all the materials are new, only where rarely it will come, only if you have messed up with your welding process. So let's see. I think in this course notes we will come to know various types of, then also I will add into my experience with this. So these kind of videos are a bit long, but of course it will help you understand the thing much better. So go through this is a type of going through your course notes, and it will help a lot. So this type of cracks, longitudinal cracks are there, transverse cracks are there. So when we are talking about longitudinal and transverse, we are talking about the welding joint, and longitudinal to the welding joint, transverse to the welding joint, and radiating cracks radiating from the common point. So there will be a one point where actually the stress is so high that the crack started from there, which we call as initiation point. From there you can see like a branch going out. If that is a problem, if the grain boundaries, all the sides are affected, or one side is affected, then the crack starts from the grain boundary, and then you will see like a branch. Then crater crack, you can see this crater crack if you are not doing proper welding. Then branching, as I said, the branches is like a tree branch connected to crack, and usually we will do so many things for repairing such cracks. So let's see, we will try to cover these in our topic. So these cracks usually are happening from the weld metal. That's why I said longitudinal to the weld metal, and longitudinal to the has, and longitudinal to the parent material, or transfers to these three. So weld metal से भी हो सकता है ये HSZ, heat affected zone, वहाँ से भी हो सकता है, which is usually 50 mm either side of the weld joint. And then parent material से भी आ सकता है, मतलब it can also start from parent material after you are doing welding. So maybe during the rolling process in the mill,
there may be certain things which are not identified in the mill, so that may be also coming into your weld joint. So ideally, in an ideal world, when if you have a very thick component to weld, you will do lamination check for the bevel area and a little bit further, at least 50 to 75 mm either side, and then you will do the welding, so that you know from the beginning that there is no lamination or there is no material problem. It is very rare to have that. So when you do 200 plates, maybe you will find one such defect in a new plate. Mostly it doesn't happen, but of course anything can happen in our industry. That's why you need to know this from the prior experience. If you have a critical joint, PWST joint, which you cannot happen a lot of repairs, so naturally you will need to do this kind of lamination checks before. Then in the jacket, when we are building oil and gas jackets, at time TKY joints are there. There you are doing lamination check before the T connection or Y connection is going. The saddle joint is getting to the main leg. There we will do the lamination check on the main leg first. Ensure that this is actually coming as a Z grade material, but still we are doing the lamination check once before the T gets attached. T, I mean to say, another pipe with a smaller diameter will get attached, so that the welding when will happen, there will be no chance of crater cracks. And then we are going inside the leg also and doing the lamination. So that those are the kinds of checks that is after the welding, to find if there is any lamination sort of cracks. Okay, but then let's proceed. Exception: crater cracks are found only in the weld metal. Naturally, crater crack is a problem of welding, so naturally it will come from welding material itself. I mean welding joint itself. So depending on the nature, the cracks are either hot, so we call them as solidification or liquefaction cracks, or precipitation induced, that is a reheat cracks present in creep resistant steels. So creep resistant steel, we will find the precipitation induced cracks. So, and also we'll find cold cracks, which is hydrogen induced cracks. For example, we have done the welding and then the welding is done in a hydrogen rich atmosphere. So then you will see after 48 hours or after 24 hours also, hydrogen is actually, which is escaping from the joint, is getting trapped somewhere, and that is getting a cold crack. Then you have lamellar tearing, which I explained you that you need to do lamination to identify lamellar tearing. Lamellar tearing are those defects which are embedded in the steel and rolled, so that when you are doing the cutting, you cannot see them. There maybe they're a little bit inside. So, but when you put a joint and then you start to weld, these tearing, it will delaminate from the steel, and it will cause a crack because of the stress involved in this joint. Let's see one by one, so that we will understand these concepts very clearly. Depending on the location and mode of occurrence, hot cracks can be solidification cracks. So occurring in the weld metal, usually along the center line of the weld, as a result of solidification process. One example is showing you in this. You need to imagine, observe this carefully, and also imagine this, because when let's say for example you're not going to the site and you have not seen this. Usually it can be seen, but if you have not seen this, at least when you are seen in the radiograph, probably you can identify this. These are also very tight cracks. Many radiographs will miss this. UT for sure, it will catch it very properly. So solidification cracks occurring during the process of welding as a result of the joint configuration or stresses or improper welding technique can cause this. The liquefaction cracks occurs in a course of grain. So when you talk about liquefaction cracks, liquefaction cracks, these usually occur in the grain boundaries of the HSZ area. So you will see something in the HSZ area that will not be solidification crack, but that will be liquefaction cracks. Liquefaction cracks is welding is happening, the grain boundaries are stressed, and if there is any problem there, and it can simply start cracking from there as well. So
those are the things when inspector starts his work, he will usually study this concepts in CSWIP. Then he comes to the site. Then along the way, you may not encounter this because if the site is very big, something may have happened somewhere. So if something like this happens, a QC inspector is supposed to be very inquisitive, asks his supervisor why it happened, how we did the repair, and what are the root causes of this. Need to go into very deep because it may happen in your site under you. So that time you need to know exactly how it was, rectified and all that. So here is saying that in the vicinity of the fusion line, as a result of heating the material to elevated temperatures high enough to produce liquefaction of the low melting point constituents placed on grain boundaries. What does that mean is in the grain boundaries, imagine your steel as having, when you magnify it to 10 or 20x, you will see that the grains are there, and these small grains are having their own boundaries. So if there is any material there which is, inclusion of any kind, then, it can, when you heat the joint during the welding, those items can then cause the problem and make the joint to crack. Usually it will not happen in the steel. I've not seen, very rarely this happening in a new building, but it may happen, and that's the reason it is given here as one of the causes of crack. And generally, solidification cracks can occur when weld metal is high carbon or impurity, like impurities like sulfur contents. So, for example, you're doing welding and having a bit higher carbon content, and in an impure environment. The environment which is the fit up is made, that is not good, because maybe the fit up is made is in the, if I'm building a large vessel, usually the fit up happening very down in the tanks or some places are very difficult to maintain the cleanliness environment and everything. So in such cases, usually in workshops, it may not happen because, workshop environment usually is very highly clean, and, such impurities like sulfur and all won't make you any problem. Then, as I said, depth to width ratio of the solidifying weld is too large and deep and narrow. So if the width of the joint is too wide with respect to its depth, or sometimes the depth is too much with respect to the width, that can also cause the problem, because you see many times what will happen is these kind of problems engineering and the welding engineer will try to fix during the drawing stage itself. So when the thickness, depending on the thickness, the depth to width ratio of the joint, when the welding engineer will go through the drawing, he will usually identify this as a problem if we want to weld with SMAW, GTAW, or let's say FCAW, so, and SAW also. So he will usually tell the engineering to keep that kind of joint width ratio. But it may happen many times that some joints are coming and being made. Many times there is a very small organization where the welding engineer role is also done by the inspector. So you need to do the proper inspection or proper review of the drawing. Drawing review will help you a lot of avoiding such problems in the site which you can face in the later time. And disruption of heat flow condition occurs. So this many times welding is happening, and then the heat flow adjacent area may be very cool, or adjacent area may be hotter than your welding area, or maybe a lot of welding joints are happening at the same time. So during such time also it may occur, although ideally to avoid this, that is why we are ensuring that the welding engineer will give you the weld sequence, which joint to do first, which joint to do later. That will help in the welding distortion also, to control the distortion, and it will also help the weld heat dissipation easily. So crack can be wide and open to the surface like shrinkage, voids, or subsurface, possibly narrow. We cannot say. It can occur in the capping, it can happen mid mid joint, or it may happen in the root as well. So
It can happen on all the segments. Solidification cracking is most likely to occur in composition and result in a wide freezing temperature range. That's what I said. If the temperature gradient is from hot to cold, the areas within the joint is too high, then naturally the gradient is high, then the freezing or the cooling of the joint will be irregular. So in that time, this may occur. In steel, this is commonly created by a higher than normal content of carbon and impure elements such as sulfur and phosphorus. So obviously, if you have high carbon content or impure elements in the welding atmosphere or the welding molten metal, the cooling will become irregular. And because sulfur cools at a different temperature or phosphorus, and then carbon is always making the problem. So this will create the temperature gradient automatically, and then you will see that there will be stresses involved, and then the item can be having a problem. So these elements segregate during the solidification so that intergranular liquid films remain after the bulk of the weld has been solidified. As I said, that when the joint is getting cooled, when the welding is happening, these differential rate of cooling may occur, and then the joint, sometimes some places it will be cool, some places it will not be cool, then it will create the stresses there. The place which is already cool will try to pull the place where the hot metal is there, and because of that, and that is also cooling. So if both the molten metal is at different temperature gradient, then these kind of things will happen, and you will see that happening very fast. In the higher grade material like S420, and you go S690 material, those things are very difficult to handle, and that's why there is a way of welding those material. And away from CSWIP, I want to do a video on S690 welding, how it is, how to take care of the 690 grade. Is very hard material. It is just like glass. If you don't take care of it, it will simply crack from, and how to properly cool it down, and all that is a very interesting topic. And there is a lot of wide range application for S420, S690 and beyond. And usually we can see jacket legs, the jack-up rig legs are made of 690 material, and this is very high technology and very highly mature and advanced welding. Maybe someday I will try to cover that in a different topic. So you can see a diagram of solidification cracking here. Sulfur enriched liquid film is being formed in the center, because what happens when the molten the whole welding is in the molten phase, the sides, since these are cooler areas, these two sides are cooler areas, this and this will start cooling first. Both this side and the bottom side will start cooling first, and then in the center the molten layer will still be there, and it will cool the last. So if you have impurities, what will happen? These impurities will get pushed from the side boundaries to the wherever it is molten. That when the impurities are there, they usually hang around the molten area, and they try to get pushed because they are not getting solidified. So once they are pushed, usually they are from both the sides, they will accumulate in the center, and then the solidification because of their and if you just grind a little bit, you will see that this is already there as an impure and crack. And also you can catch it very rarely in the radiography film, but you will still see, because the impurities will show up in the film, and then there will be a line, then you can easily identify that this is. So any QC inspector, you just don't try to ignore if there is some crack or something happened in the site, because it rarely happens, and then all the inspectors are not involved, but at least they should know what is the kind of crack. Go inspect it, look at yourself, see how they are doing the mitigation, what is the WPS used during this process, and how the welding engineer is getting involved. All this is a very exciting stuff in the site. So never lose a chance to go through this whole process. Your boss may say, no, it's okay, there are experienced people, we will show them, and we will they will not involve you.
but it is always helps if you try to talk to them, or at least see the documents, see the photographs, because most of the things are getting photographed and then they are in the email circulating to the management in form of non-conformity. That time you can NCR is always available and you can always see the NCR. So this diagram of solidification crack we just saw. Let's come down to its the explanation. Is important that the welding fabricator does not weld near metal surface covered with scale or contaminated oil or grease environment. Scale can have a high sulfur content, and oil and grease can supply both carbon and sulfur contamination with low melting point, such as copper, tin, lead, and zinc should be avoided. So in your site, where do you think the impurities can come from? There you may be using the pneumatic grinder. You may be using a kind of grinder which is having maintenance problem. You may be using a lot of area where there is dust prone area. So usually oil, grease. Many people are using the hydraulic jack for doing the fit up. The oil can come from there. So unknowingly this will come. Fabricator will take the gloves and he will go and touch the hydraulic with the same hand. If he comes and touches the grinder, and then he will go near the bevel. Many times we are just taking the gloves and cleaning the bevel like that. So this oil is introduced like that, and you will not see this. The oil film may be very thin. You may not be able to see this, but the moment these kind of equipments are near the joints and with the hands of fabricator, you can understand that this are having a chance. So you can clean this joint with acetone, or let's say some degreaser that can help this reduction of such impurities. So you can see the hydrogen induced crack has happened here in the heat affected zone, and here it has happened in the heat affected zone as well, because of the stress involved, because of both the sides are pulling. Naturally this side also is showing a little bit. It's a typical fillet joint if I'm not wrong, because there is a gap here. Many times the gap is very small, and that's the reason where these stresses involved become higher, and then also there is a problem. So for the fillet joint to be proper, there are minimum gap requirements given in the code. Like for example, DNV will say it should be at least 1.5 to 2 mm. So to take care of the stresses involved in the fillet joint as well. Then there is a fillet joint welded from thicker member to thinner member. So one has to understand that as well. Hydrogen induced crack occurs primarily in the grain coarsened region of the heat affected zone. So one of the deadliest cracking identified in our industry is hydrogen induced cracking. If you have time, I will you should go to YouTube and just say, you write there hydrogen crack experiment. So you will find a video in which the person is welding different kinds of electrodes, like 6010, which is high in hydrogen, then low hydrogen like 70 16, 70 18. Then there are other type of cellulosic environment coated electrode has been welded with small specimen, and then he will keep it in the mineral oil for at least 1 day, 2 days. And in that video you can see how the hydrogen gas is escaping from the weld joint. It's very exciting to watch, and I don't know if because of the copyright issue I can show it in this. I'll just try to find some video and try to post with this video itself. But I am thinking people should do their own search, not depend on the people to give them spoon feeding, because it's a very exciting topic. So there you can see how lower hydrogen electrode is still giving out hydrogen. So it doesn't mean that low hydrogen, that means that it will not have any kind of gas escape. So hydrogen will be there and it will escape. Only thing is that how you manage this properly by giving proper heat and then not suddenly cooling it and allow the hydrogen to escape from the weld. So
the coarsened region. So it will start from primarily the grain, where the grain are bigger grains. That means with the harder region of the has, known as cold and delayed, or why it's called delayed crack, because it usually takes time. That is why many of the steel, many of the clients are recommending their joint to be where the special steels are involved. Then they will say that the NDT should be done after 48 hours or after 72 hours also. Many European specs are calling for after 72 hours. So delayed underbeat toe cracking, it lies parallel to the fusion boundary, and its path usually combination of the inter and granular cracking. So that's what he's telling, that the grain size and the grain from the colder region and the grain from the hotter region and the grain of HAZ, if these grain boundaries are of different sizes, then and these are not aligned to each other properly in a soft fashion, obviously there will be stresses involved there, and it will start from the bigger grain size boundary. Because why they are saying bigger boundaries, imagine you are having a lot of footballs and you are having a lot of golf balls. So the golf balls are going below the football and then you cannot see them, right? In between 4 football, if you put one golf ball or a table tennis ball easily, and it will fit there and it will get stuck there. It will not be able to escape. So hydrogen also gets, since the size of the hydrogen is only 2 atoms or 2 molecules, or the size of that is 2, like helium is 1 in the periodic table. You can see that this is so small that it will go and get entrapped in the grain boundaries, larger grain boundaries, and from there, if it's not able to escape, then it will create the tensile stress, and it will try to escape. Because it has to escape, then it will create the stress, and then it will escape in the form of a crack. So the direction of the principal residual tensile stress can be toe crack, cause the crack path to grow progressively away from the fusion boundary towards the region of lower sensitivity to hydrogen cracking. So that's why from that place where it is entrapped, it will try to escape through the lower sensitive area. When this happens, the crack growth rate decreases and eventually arrests. So he's trying to explain here when the conditions where the hydrogen will escape, and then you will not have a situation where it will get stuck somewhere. 4 factors. This particular diagram and this particular 4 factors, I think we should cut this and paste it in our company notice board somewhere in the site, so that everyone will know about hydrogen cracking, why it has happened, and what are the causes of this. Sorry, beg your pardon. So the 4 factors are necessary to cause the hydrogen HZ hydrogen cracking are the hydrogen levels. So primarily your electrode, if you are using a higher hydrogen electrode because of some reason that you have to use, then you need to understand this, that okay, my electrode is having high hydrogen content and I need to properly give the preheat and post heat so that it will be removed. Usually we are using very low hydrogen. We are using 4 ml per 100 gram electrode. 7016 we are using -1. -1 is 4 ml, I think it is, if I'm not wrong. It's very less. So the chances of hydrogen coming from the electrode are very minimized. Then the stresses. If the stress in that area is 0.5 of yield stress, so how you will know this? Because you will know this if there is a very heavy thickness involved. If this fit up is done in a panel where a lot of such heavy thickness is involved, so you know that there are stress is going to happen there, because a lot of joints are there. Lot of joints, when welded with each other, they will pull the stress with each other. So naturally there will be stress involved in this. Then temperature.
Then because the hydrogen usually gets entrapped in the 300 area range, in the 300 range it usually is trying to escape the weld metal. So 300 degrees is considered to be very critical for the hydrogen entrapment. So usually that time it is either giving its electron or trying to take the electron. It is very active in that range, because when you are trying, when it's going to be very active, it's going to be very, very reactive. So it will react at that temperature. So usually at a higher temperature like 1000, 800, 500, 400, this will not be that reactive. But once 300 is there, hydrogen, it's having its own physical property. So the temperature, when it becomes 300, it will be reactive. So that time, if the thing suddenly cools, then it will be in danger of getting entrapped. Then susceptible microstructure, where the very high hardness is involved. As I told you, 690, 420 material. These are hardness is very, very high there. And that hardness is high because the material is required to do a certain job. And because of that, the hardness is kept. So if such welding is cooled rapidly, naturally it will definitely have hydrogen entrapment. And we have seen a lot of cracks on the side because of this. Even the I've seen even the tack welding getting cracked. So we are telling them to do 50 mm tack welds, because the heavy nature of these materials are very heavy thickness. So the 50 mm tack also will get cracked many times if you are not doing proper preheat. And even after doing the tack welding, you are supposed to do some heating, for some time to remove the hydrogen. Otherwise, that will get entrapped there, and then you will have this crack even on the this. But normally S355 steel, or if you have SS, let's say 516 grade 70, the boiler pressure vessel plate, those kind of things, it won't have that kind of impact, because it is not that the hardness is that high for that material. So you can see this when the temperature, stress, susceptible microstructure, and also the hydrogen content all come together. So you will have a very high chance of hydrogen cracking. So let's move from here. I think you should take this, cut it out, put it in different colors, and put the hydrogen in the red color, and then put it on the notice board for everybody to know. Because otherwise, what will happen? This material which we are studying will remain in these books, and if it is not coming out, so it will not help the welder, fabricator, welding foreman, welding supervisor to understand these concepts. If they understand this better than you, then you are not required. So that is our whole life should be that we should always be engaged in enriching the knowledge of welder, fabricator, foreman, so that if they know the dangers, QC inspector's life will become much easier. So if one factor is not satisfied, cracking is prevented, so that can be avoided through control of one or more factors. Apply preheat, slow down the cooling rate, and thus avoid the formation of susceptible microstructure. So preheat, post-heat is required wherever it is. Usually you will not decide this, the welding engineer will decide that. And then you have to just implement the WPS. So you have to see that is done or not in the site. Welding inspector is not making any kind of decisions which are coming of this nature. It is coming from the welding engineer, because he's a technologist. He will study the technology, he knows the material, he knows the metallurgy, and then he will build the WPS. And for that, he knows where the preheat is required, where is not required. So an alert QC inspector can read all this and read the mind of welding engineer. So he knows what welding engineer really wants him to do at site. Think about it like this, and then it will be easier for you. Even though the QC inspector may be BE engineer himself, because in BE engineering, they are not teaching you that kind of deep concepts of welding. This is usually done in a different kind of course where the welding engineer learns this and implements. Welding engineer course itself is completely different from BE engineer. So BE engineer should not think that, oh, I am a mechanical engineer and I can understand all these concepts easily and all. No, there is a welding metallurgy is a different subject. Don't try to play with welding metallurgy yourself, and you always try to implement the WPS. That is what is required from the welding supervisor, sorry, welding QC inspector.
Maintain a specific interpass temperature. As I said, interpass temperature, mostly if it is 300 degree, then naturally it has the effect of that. So it has to be maintained properly. Post heat. So what will happen if you are not doing this interpass temperature proper? The welding will cool down. Then again he will restart welding below the interpass temperature. Then again the weld metal is getting a little bit heated in some places. This can cause the temperature gradient, and then the hydrogen entrapment can occur. So if there is any heavy wall thickness to be welded, you have to tell your welding supervisor, foreman, till at least that welding is done, at least 1/3 welding is done, that welding should not stop. And further also, when the welding starts, it should not be that आज एक मीटर मार दिया और दूसरा जगह पे जॉब आ गया तो वेल्डर को उधर से निकाला, दूसरा जगह पे डाला, फिर वो जॉब हो गया, इधर आ गया, फिर वापस वो 4 मीटर मारा और फिर वापस वेल्डर को दूसरा जगह पे रिक्वायरमेंट है तो वेल्डिंग शिफ्ट कर दिया वापस। ऐसा करते जाएगा तो नेचुरली वो जॉइंट को बहुत स्ट्रेस आएगा और उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आने का चांस है। So post heat of the completion of the welding to reduce the hydrogen content by allowing hydrogen to diffuse from the weld area. As I said, post heat is also become very important in such kind of material. Apply PWST to reduce residual stress and eliminate susceptible microstructure. So wherever the PWST becomes mandatory because of material, because of code requirement, that has to be done, and that PWST can alleviate the stresses involved in the job. So PWST basically done post weld heat treatment is to reduce the stresses, and it will give a longer life to the component. So reduce weld metal hydrogen by proper selection of welding process, consumable, etc. So यहाँ पे जो basic covered electrodes है या identification that okay ये SMAW से मारेगा तो अच्छा है, GTIW से high heat आ जाएगा, SMAW से heat थोड़ा balanced रहेगा, SIW से भी मार सकता है. So ये सब welding engineer सोचता है और welding engineer will finalize that okay this is what the proper selection of welding process is supposed to be done. Then use a multi-run instead of single-run technique to eliminate the susceptible microstructure of by the self-tempering effect. Reduce hydrogen content by allowing hydrogen to diffuse from the weld area. So multi-run, in a joint, naturally you will have more runs. You cannot complete the joint by very few runs. So the bead width, everything should be controlled properly. QC should keep an eye that the welder doesn't make very big weld beads, which will make it susceptible to this stress. Then use a temper bead or a hot pass technique. That's what I had said. Temper bead or hot pass technique, where these kind of welding techniques will help the problem to reduce. Then use austenite or nickel filler to avoid susceptible microstructure formation and allow hydrogen to diffuse out in the critical areas. So this is also decided by welding engineer that what kind of filler material to be used and made the WPS. Then use dry shielding gases to reduce hydrogen content. So when the gas is given, you need to always check the moisture content into the gas, the purity, the the material certificate of the gas you must check. So clean rust from the joint to avoid hydrogen contamination from moisture present in the rust. So rust is a very bad place where, for example, there is a joint which is done fit up and 4 or 5 days there is no welding, and during that time it's a raining kind of environment, then naturally there will be rust formed in that joint. Then that rust, sometimes you can see the rust in form of the red color bloom, and many times you may not see, but there are such rust which is very, very difficult to see because that is just formed 1 or 2 days only. So you must insist that the fit up is released immediately, the welding should start. Or if you want to give 3 days, 4 days, 5 days, then the welder must clean the joint and re-show to the QC inspector, then he should start the welding. So then you clean the rust, of course, then reduce residual stress. So what is the meaning of reduce residual stress? Whenever the fit up is done, you can see many times the fit up is done by bringing the two material together in stress, trying to tack weld it. So you can see if the tack welding of the place is getting removed or getting cracked, you will know that this item is in stress.
और ये जो फिर फैब्रिकेटर है इसने इसको जबरदस्ती हीट करके या टैग करके फिटअप बनाया है. सो इन सच एनवायरनमेंट देयर इज स्ट्रेस ऑलरेडी इन द जॉब. तब आप इमेजिन करो वेल्डिंग करने के बाद ये स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ता है, और ये बढ़ने की वजह से फिर इसमें हाइड्रोजन का प्रॉब्लम आता है रेसिडुअल स्ट्रेस की वजह से. Stress is one of the important factor. If you see this, this one side is stress, high stress. Blend the weld profile to reduce stress concentration at the toe of the weld. So, for example, where I have seen the toe blending is in very heavy thickness joints where the load bearing is coming. There the toe is actually blended, very smooth blending is done, and towards the joint and the parent material there is not a single stress concentration area. And then we are using the 25 paise coin or 1 rupee coin to check the toe blending, or even you can use the washer of the stud and nut. That washer also is circular, so you can use that and see how the toe blending is very smooth. Lamellar tearing, as I explained you, when in the joint, when lamellar tearing can happen, there if you do lamination first, then do the joint, then you can avoid that. So lamellar tearing can occur on the rolled steel product primary plates. Main distinguishing feature is the crack has a terraced appearance. Terraced appearance means ये ऐसे like stock market का जो उसके जैसा नहीं रहेगा, ये different type of स्टेप है. इसको आप अगर इमेजिन करना है तो ACDC का जो ऑसिलोस्कोप है उसमें ये ऐसे आता है, ऑसिलोस्कोप जैसा रीडिंग आता है, इसमें ऐसा आता है. You see the steps, it looks like this ACDC जैसा पॉजिटिव नेगेटिव जिसके तरह से उसका जो ग्राफ आता है उसके जैसा ये दिखता है. ये दिखने के लिए ऐसा अपीयरेंस आता है. Immediately you will know that this is the lamellar tearing kind of. So cracking occurs in the joint where the thermal contraction strain occurs in the through thickness direction of the steel plate. Through thickness direction इसीलिए बहुत जगह पे जहाँ पे जैकेट कंस्ट्रक्शन है, क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे Z grade material यूज किया जाता है. Z grade material means when rolling is happening in the thickness direction, वो डायरेक्शन में ये ऑलरेडी ये प्लेट टेस्टेड रहता है. और एक Z grade टेस्टिंग करके भी है जो you can do the testing in the, you can send any specimen, you have to mention the rolling direction and send it to the lab. They will do the pull test on this to identify the material is sound or not, or if it is not sound they will tell you that this is failed. So you can understand that this has failed in the lab. So you need to do the UT and confirm this that there are no inclusions in this material. So the diagram of the lamellar tearing contraction strain imposed on the planar non-metallic inclusion results in the progressive decohesion from the roughly rectangular holes, which are the horizontal parts of the cracking parallel to the plate surface. Oh, he has made this English worse to the persons to understand. So as you said that it is perpendicular to the joint, if I understand that is as a T joint, and if this material has some problem here, naturally the stresses are working in opposite direction, naturally it will crack. These two stages create a terraced appearance on this crack surface. That's what this appearance shows like this. The two main options are available to control the problem in welded joints liable to lamellar tearing. Use a clean steel with guaranteed through thickness properties. ये कैसे होता है? ये from the engineering itself. So when the engineer is doing the design, he will tell you where the Z grade is required. For example, if you see any drawing of general arrangement drawing of the jacket, at least one drawing if you see, if anybody has that experience, there it will mention this areas where the TKY joints are coming usually are having that kind of property. I'll just try to show you by one photograph.
I wish I had taken the drawing of one of the I don't know, but I will try to put this. I try to bring that, the photograph here. So let's see cavities. So cavity is like, a void. Gas pocket is also a cavity. So gas cavity, you can see gas cavity, it is divided into two different types. One is the gas cavity formed by entrapped gas, shrinkage cavity caused by shrinkage during solidification. So you may have an expanded gas pocket there, which because of the lack of cooling properly, or you can have a place where it is shrinking because of the solidification, because of the weld when it is solidifying. That time a shrinkage cavity can occur there. So what are the kind of gas pockets? This also you need to know this chapter, because when you are doing the radiography interpretation, एक्चुअली QC इंस्पेक्टर सिर्फ फिटअप या और वेल्डिंग विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं है, आगे जाके उसको रेडियोग्राफी भी देखना पड़ेगा, यूटी भी चेक करना पड़ेगा, उसको एमपीआई का नॉलेज होना चाहिए, इसको डीपीटी कैसे करता है मालूम होना चाहिए, हैंड्स ऑन नॉलेज होना चाहिए. रेडियोग्राफी का हैंड्स ऑन नॉलेज रहेगा तो और भी अच्छा है. फॉर एग्जांपल माय करियर, आई स्टार्टेड माय करियर एज एन एनडीटी टेक्नीशियन way back in 1997. My first job was outside India. I started my career outside India as NDT technician. So I could do RT myself, gamma ray. I could do MPI myself. I could do everything myself. So, but in 4 years, I was sick of, and I had enough of NDT. Instead of becoming a level 3, I wanted to become a QC, in quality control, because I saw that quality control is guiding the NDT. So NDT himself is not the boss, but quality control is the boss of NDT or quality assurance. Then I went into and took the welding inspector's course in 1999, and I became AWS welding inspector. And then my first job was in Dubai Dry Docks in 2001, if I'm not wrong. So it took me 5 years to come out of NDT field, but eventually I started as a inspector in Dubai Dry Docks. Then I became senior inspector. Then I became the manager in 2007, and from 2007 till now I am a QC manager, a QA/QC manager. Then along the way I took many skills. So this is my small this. You can go and visit my LinkedIn profile, and you will, I think, you will be able to see what is my career. So coming back to the gas, the type of cavities are gas porosity, then uniformly distributed porosities, because porosities comes because of the air. If there is wind in the climate and weather, you will see a lot of pickup of gas porosities and all that. So cluster porosities can come because of this wind is swirling around. Then linear porosity, if that wind is very bad. Elongated porosity, wormholes are just like a long porosity, that gas because of the air. If your weld metal shielding is getting disturbed by this wind, and then the dust, naturally these kind of things will come into the weld joint, and then it will show in the radiograph when you are doing the RT of the joint. What about the shrinkage cavity? The interdendric shrinkage. Interdendric is the grain boundaries. In this grain boundaries there can be shrinkages. Then crater pipe. Crater pipe is also one of the wrong techniques of welding start and stop methods. During that time crater crack can occur. A crater can occur in the joint, and this looks like a pipe. It looks like elongated crater, so it will look like a pipe. Micro shrinkages are grain boundaries issues which during the what we call as when the solidification is occurring of the weld metal, the shrinkages are happening in the grains boundaries, and that can cross this. So you can see the micro shrinkage of the grain boundaries and transgranular shrinkage. So when a group of grain boundaries are shrinking, that time these kind of things can happen. Mostly I have seen very less of these kind of things. I can see crater happening, no doubt, but porosity is very, very widely happening. So on the left side, this is almost 70-80% of the
job you will see this, and very rarely you will see shrinkage, cracks and all that. So you can see the gas porosity. You can see that in the joint radiography it will come as dark color. Gas cavity of essentially spherical shape trapped within the weld metal. So gas cavities can be present in various forms. Isolated means it can be one or two distributed in the 15-inch, or it can be aligned, or it can be clustered. So uniformly distributed, clustered linear porosities which are in the line, elongated cavity, surface porosity. So everything can be there. You can also see surface porosities many times, and during MPI you can spot them during the dipenetrant test also. And if you see acceptance criteria of ASME, AWS or ISO standard, then you will spot there are given is like a diagram, and then you can see the photograph, and that exactly we have to, when we are watching the radiograph, we have to compare the drawing, and then we will know what is linear, what is distributed, what is clustered. There are the dimensions given, so based on that you need to identify them. So what are the causes? Damp fluxes, corroded electrode. So if electrode is not of good quality, you may pick up this kind of problem. So use a new electrode, fresh, check the electrodes properly, and they should be in good condition. Grease, hydrocarbon, water, contamination of prepared surface. So I told you in the fit up, so many problems are there. That is, if it is unclean, then you will know that on the job porosity can occur. Air entrapment in gas shield. So if you are using gas as a welding gas shield in the welding equipment, naturally that can be major cause of entrapment. Like for example, the MIG-MAG welding naturally has CO2 gas, so naturally the gas can get entrapped. Check hose connections, leakages, and the flow. The flow should be proper. Incorrect, insufficient deoxidation in electrode, filler or parent material. Use electrode with sufficient deoxidation activity. So the welding engineer should check the MTC, and then only he should be approving them. Too great arc voltage or length, reduce arc voltage and length. Naturally, this voltage, if it is beyond the WPS range, it can happen. Gas evolution from priming paints, surface treatment. So what happens in many sites, they are doing priming of the job, means they are doing a primer coat, or they may use a weldable primer. If that weldable primer thickness is more than 25 microns, then you may have this kind of problem during welding. It will create porosity. So the thickness of that weldable primer should be below 25 to 30 microns, because it should be a thin film so that the welding is done properly. Too high shielding gas flow rate. As I said, the flow rate also has to be checked. One important thing they have not discussed is the gas cavities can also occur in the high wind environment, but I think they have not considered that as a point. Then wormholes, you can see the typical description here of the wormholes. These are the wormholes. And why do they occur? Elongated or tubular cavities formed by gas trapped during the solidification of weld metal, which can occur singly or in groups. So you will learn a lot of things. And let me check if the sharing is going on. Okay, let's restart this. So description of the wormholes, causes and prevention. So gross contamination of preparation of the surface. Prevention you can do by better cleaning. Laminated work surface. Replace parent material with an unlaminated piece. So laminated work surface means the plate itself is having lamination. Then crevices in the work surface due to joint geometry.
So you need to avoid the crevices. As much as possible, the joint should be linear, like straight line. And if there is any joint where the multiple joints are coming and joining, then naturally the welding engineer must become alert, and he will try to do the better welding sequence for that kind of joint shapes. Then comment: wormholes are caused by the progressive entrapment of gases between the solidifying metal crystal dendrites. So the crystal grain boundaries, producing the characteristic elongated porosity, circular cross section. So it looks like circular porosity and elongated. There you will see this in the very critical joint surfaces where there are multiple joints coming and meeting, and that is a place where this can happen. This can appear as a herringbone array on a radiograph, or some may break the surface of the weld. Well, in the radiograph, you will have to see this as very long arrays. I myself has not encountered this at all, but in the radiography, you may see this very rarely. But once you go through this only, you will understand. Yeah, this is the pattern which is very mimicking the wormhole geometry. Surface porosity, it can be open to the surface and it can be seen like this. So surface porosity is the porosity or gas porosity which has opened to the surface. So why it will happen? Again, same damp surfaces and contaminated surface. Clean surface and dry electrodes are required for preventing that. Low flux activity. So in the MIG-MAG welding, flux core welding, the fluxes are very less, not properly distributed. Then this can happen. So you can use a high activity flux. So if something like this is happening in the site, you can immediately tell the welding engineer, and he will identify this as a problem of the flux. So excessive sulfur, particularly free cutting steel producing sulfur dioxide. Use high martensite manganese electrode, to produce manganese sulfate, but MNS. Note: free cutting edge steel, high sulfur, should not normally be welded. So that's what this is. Again, a welding engineer area. If he sees such a material in MTO, then naturally he will get active and he will say that this will cause problem in welding. Loss of shielding gas due to long arc or high breeze environment. So that also is improved by putting the screens, and you need to prepare the screens in advance and keep it ready. When the winds are there, you need to put them at various places where the welding is happening. So shielding gas flow rate that is too high results in turbulence, and because of that turbulence also there are pickup of these kind of gas porosities. And let's come to crater pipe. This is how it looks. You can see only the opening in the surface, but it's actually a little bit elongated inside. And that's why it is called crater pipe. Pipe means the length of this looks like a pipe with a hole like this. Usually it's very small. It's 10 mm, 12 mm, 20 mm. You can see that diameter size is also very less. Maybe 1 mm, 2 mm diameter max. Shrinkage cavity at the end of the weld run, usually caused by shrinkage during the solidification. So lack of welder skill due to using process with too high current, that can result this. Then how you can catch this? If the welder is welding with a high current, you will know that he is going to end up with crater pipe. So you have to restrain the welder, say that you have to weld within the welding WPS parameters. Inoperative crater filler. So slope out. This is a TIG technique actually. When you are doing TIG welding, in operative crater filler. So that proper technique, if he is not using to fill, naturally he will end up doing crater cracks. In the crater pipe he may be able to produce. Then crater filling is particular problem in TIG welding due to its low heat input. To fill the crater, for this process it is necessary to reduce the weld current in a series of descending steps until the arc is
extinguished. So you will see when he is about to end the job, he will slowly do certain technique which will reduce the heat, and then it will finish the job and he will extinguish the arc. Those are the gas kind of inclusion. Now this is solid inclusion. Solid inclusion is basically foreign material entrapped in the weld during the welding stage, or it can happen during the fit up stage, and then when you start welding, then that can add to the problem. So solid inclusions, you have slag, you have flux inclusion, you have oxide inclusion, you have metallic inclusions. So tungsten, copper, other material under the metallic inclusion can happen. We will see how it happens. Then flux inclusion can be linear, isolated, and clustered also. Slag inclusion, you can see the slag inclusion in this radiograph. I think he has given. Let's talk about this. Slag trap during the welding, which is irregular shape, so differs in appearance from a gas porosity. So to identify slag is very difficult because it will not have a regular shape. Usually it will be irregular shape, it will be continuous, and it will be very difficult to predict. अगर आपको slag देखना है तो SAW वेल्डिंग के बाद जो slag ऊपर आता है, फ्लोट होता है और वो बाहर निकल जाता है, आप उसका शेप देख सकते हैं, वो बहुत ही irregular और बहुत ही स्टोन जैसा रहता है. Removal from underlying surface of the multi-pass weld. So if the thickness of the weld is too big, then they are not doing the grinding and removing the slag after every pass, then you will have this problem. So welder, either he needs a grinder full time, or he need to do the grinding. So to improve the efficiency of the welder, usually there will be a helper who will be doing this grinding. So improve the inter-run slag removal, slag flooding ahead of the arc, that also can entrap the slag. Position work to gain control of the slag, welder needs to correct the electrode angle. So many times electrode angle also plays an important role. If it is too steep an electrode angle, naturally the slag will move ahead of him and then it may get entrapped. So entrapment of slag in work surface, make work surface smoother. So if your fit up is not smooth or regular, if it's too irregular, just like सिर्फ प्लाज्मा CNC से कट कर दिया या सिर्फ प्लाज्मा से कट किया और आपको बिना ग्राइंड करके अगर वो मटेरियल दे दिया, तो वेल्डिंग के टाइम पे क्या होगा, ये जो सरफेस इरेगुलर स्मूथनेस है उसके वजह से स्लैग वहाँ पे ट्रैप हो सकता है. Fine dispersion of inclusion may be present within the weld metal, particularly if a MMAW welding process is used. MMAW is the SMAW process. In US they call this as MMAW. These only become a problem when large or sharp edge inclusions are produced. Let's see flux inclusion. So flux is, as you know, flux is required during the welding for few welding types. So flux trap during the welding, which is irregular shape, so differs in appearance from gas porosity. वो आप easily पता चल जाएगा आपको, नहीं ये slag है, ये gas porosity है. Gas porosity रहेगा तो वो rounded रहेगा, whereas ये इसका shape ही बहुत irregular रहेगा. अगर आप UT लेके इसका scanning करेगा तो आपको बहुत सारा echoes आएगा जिसमें पीक नहीं होगा एको का. सो बहुत ही डिफिकल्ट है उसमें से बैकवॉल लाना है. बैकवॉल मिलेगा बट वो बहुत ही इरेगुलर होगा उसका बैकवॉल. सो इट विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज द स्लैग और फ्लक्स. सो अनफ्यूज्ड फ्लक्स ड्यू टू डैमेज कोटिंग, ये हो सकता है. सो जो इलेक्ट्रोड का कोटिंग है वो अगर डैमेज होगा तो वहाँ पे वो फ्लक्स नहीं होगा, तो उसके वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है. सो यूज इलेक्ट्रोड इन गुड कंडीशन में अच्छा होना चाहिए इलेक्ट्रोड. फ्लक्स फेल्स टू मेल्ट एंड बिकम्स ट्रैप्ड इन द वेल्ड, SAW और FCAW. तो यहाँ पे ज़्यादातर FCAW और SAW वेल्डिंग में क्या होता है कि फ्लक्स मेल्ट नहीं होता है और फिर बाद में ऊपर नहीं आता है फ्लोट होके, तो वहीं पे ट्रैप होके रह जाता है. और फिर ये भी हो सकता है कि अगर पुराना फ्लक्स यूज़ किया है, फेक फ्लक्स को बराबर बेक नहीं किया है, तो वो सब इंक्लूजन में आएगा. इससे
फ्लक्स को जब बेक करता है तो वो टाइम पे आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर बराबर है कि नहीं। और अगर वो फ्लक्स का ऊपर में वो बेक कर रहा है तो ऊपर का टेम्परेचर, नीचे का टेम्परेचर, बीच में का टेम्परेचर आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब वो ऐसा इनग्रेडिएंट बन जाता है तो इसमें फ्लक्स हम लोग जो नीचे से निकाल के ले लेता है ये समझ के कि वो गर्म है, हो सकता है वो ठंडा हो। तो नेचुरली ये जो सिचुएशन है ये सब बहुत ही बारीकी से हम इंस्पेक्टर को साइट में देखते रहना चाहिए। Oxide inclusion. Oxide trapped during the welding, which is irregular shape, uh, shown differs in appearance from gas porosity. आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील का रूट अगर हम लोग बिना पर्जिंग के मारेगा तो वहाँ पे जो ऑक्साइड बन जाता है काला कलर का, उसका बहुत ही इरेगुलर शेप रहता है उसका। तो वो sort of looks like flux but different, is in dark in color, but वो oxides रहता है। So heavy mill scale rust on the work surface के ऊपर आपने अगर वेल्डिंग किया होगा तो नेचुरली उसका अपीयरेंस ऐसा आ जाएगा वेल्डिंग के अंदर। So special type of oxide inclusion is puckering, which occurs especially in the case of aluminum alloys. Cross oxide film enfoldment can occur due to combination of unsatisfactory protection from atmospheric contamination and turbulence in the weld pool. So ये जो oxide inclusion he has used the word is puckering. So forget about that word. Special type of oxide inclusion is puckering, which occurs especially in the case of aluminum alloys. So aluminum alloys welding के time पे gross oxide film enfoldment can occur. हो सकता है ऐसा कि आपका gross oxide film बन जाए due to combination of unsatisfactory protection from atmospheric contamination and turbulence in the weld pool. So अगर आपने बराबर से प्रोटेक्शन नहीं किया होगा, वो एल्यूमिनियम वेल्डिंग मैंने भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, बहुत ही कम लोगों को इसका सौभाग्य मिलता है। So aluminum welding is considered special and it is rare because हम लोग यूजुअली सिर्फ स्टील और स्टेनलेस स्टील, ड्यूप्लेक्स स्टील, ज़्यादातर टाइटेनियम यही सब चीज़ हम लोग ज़्यादा हैंडल करता है। एल्यूमिनियम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का बहुत ही कम आपको ये नज़र आएगा। Then tungsten inclusion. So TIG welding में ही ये होता है. So it can happen only in the TIG welding. Particularly tungsten can become embedded during the TIG welding, appears as light in the radiograph as tungsten is denser than surrounding material and absorbs a large amount of gamma radiation. So ये जो tungsten है, एक tungsten का जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें टॉर्च में, वो tungsten का जो मटेरियल है अगर वेल्डिंग के टाइम पे उसने ये टंगस्टन अंदर छोड़ा है तो नेचुरली वो एकदम छोटा सा लाइट स्पॉट नज़र आएगा आपको रेडियोग्राफी में। अब ये जो है ये रेडियोग्राफी है, ये रेडियोग्राफी में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट एरिया है ये रूट पास है और ये जो स्पॉट है ये रूट पास के बाद कहीं तो भी ये आया हुआ है, जो लेफ्ट साइड में आया, अपर साइड में आया हुआ है। सो ये मिड कैपिंग के बाद मिड लेयर में ये होने का चांस है टंगस्टन का ये जो इंक्लूजन है। सो इसमें भी 1 mm 2 mm 3 इसका डिपेंडिंग ऑन द साइज इसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर इसको आपको रिपेयर देना पड़ेगा। पर ये सिर्फ टिक वेल्डिंग में देखा गया है क्योंकि टंगस्टन सिर्फ टिक वेल्डिंग में यूज होता है। कॉजेस कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड टिप विद वेल्ड पूल, keep tungsten out of the weld pool, use high frequency start. So welder start करता है तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा उसका इलेक्ट्रोड कट के नीचे वेल्ड पूल में रह जाएगा। सो कॉन्टैक्ट द फिलर मेटल, कॉन्टैक्ट ऑफ फिलर मेटल विथ हॉट टिप इलेक्ट्रोड। सो द फिलर मेटल जो एसएस में यूज करता है एक हाथ से वो जो वायर यूज करता है तो उसका जो हॉट, अगर वो हॉट रहेगा और वो इलेक्ट्रोड जो टंगस्टन का टॉर्च में है टंगस्टन उसके साथ वो टच हो जाएगा तो भी फिर वो टंगस्टन को डिस्टर्ब करता है, फिर वो उसको टूट के नीचे गिर जाता है। सो अवॉइड कांटेक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द फिलर मेटल। सो अगर आपको ये जो फिलर वो ऐड करते जाता है वो टॉर्च से उसको हाई फ्रीक्वेंसी से टिग में उसको he will keep on melting it, so the filler little bit has to be away from that electrode.
सो एक्सीडिंग द करंट लिमिट फॉर अ गिवन जॉब, सो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोड का करंट बहुत हाई है, सो रिड्यूसिंग वेल्डिंग करंट विल हेल्प दिस. Extension of electrode beyond the normal distance from the collet resulting in overheating of the electrode. मैंने ये already cover किया है, इसलिए दोबारा इसने लिखा है. So reduce the electrode extension and welding current. Inadequate tightening of the collet. So tighten the collet. तो collet tight नहीं होगा तो भी वो बोलता है कि ये tungsten उसमें आ सकता है. Inadequate shielding gas flow rate or excessive draught resulting in oxidation of the electrode tip. So अगर आपका गैस आर्गन गैस का इम्प्योर रहेगा या बराबर फ्लो नहीं रहेगा तो भी ये हो सकता है. So adjust the shielding gas flow rate, protect the weld area, ensure the post gas flow after stopping the gas are continuous at least for 5 seconds. नहीं कि आपने बंद किया इमीडिएटली बंद कर दिया वो एक ही साथ में, ऐसा तो होता नहीं है यूजुअली क्योंकि आर्गन गैस तो फ्लो होता रहता है. सो ये ऑक्सीडेशन ये प्रिवेंट कर सकता है. स्प्लिट और क्रैक्स इन द इलेक्ट्रोड. सो ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है ये इसमें स्प्लिट या क्रैक होगा तो फिर वो नेचुरली इसमें आ जाएगा. सो चेंज द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द करेक्ट टंगस्टन साइज टंगस्टन इज सिलेक्टेड फॉर द गिवन वेल्डिंग करंट. सो आपने देखा होगा बहुत बार वेल्डिंग टिक वेल्डर को वो जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसको वो शार्प करते रहता है ग्राइंडर पे और बाद में फिर उसको यूज करता है. आपने बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर. इनएडिक्वेट शील्डिंग गैस, यूज ऑफ आर्गन ऑक्सीजन मिक्स और आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स. ऐसे तो करता नहीं है कोई, बट यूजुअली कॉस्ट बचाने के चक्कर में लोग ऐसा करता है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है. लैक ऑफ फ्यूजन पेनिट्रेशन, ये बहुत ही वाइडली अकर्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑकर करता है वेल्डिंग में क्योंकि ये लैक ऑफ फ्यूजन पेनिट्रेशन मोस्ट कॉमन है ये वेल्डिंग में. अगर वेल्डर अच्छा नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है तो लैक ऑफ फ्यूजन पेनिट्रेशन करेगा. अगर वो जो जॉइंट ज्योमेट्री बराबर नहीं है तो फिर जॉइंट में वो फ्यूजन आ सकता, लैक ऑफ फ्यूजन आ सकता है, पेनिट्रेशन आ सकता है. सो लैक ऑफ फ्यूजन में लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन है. साइड वॉल मीन्स व्हाट? साइड वॉल ऑफ द वेल्डिंग. सो ये जो बेवल है, सो इसका जो बेवल का एक साइड है उसको साइड वॉल बोलते हैं, तो वो साइड वॉल फ्यूजन. अगर वेल्डिंग के टाइम पे दोनों वॉल को फ्यूज नहीं किया उसने बराबर तो एक टाइम पे साइड वॉल फ्यूजन को साइड वॉल फ्यूज नहीं होएगा, सो उतना लेंथ में फिर वो रिपेयर आ जाएगा. सो लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन इज मतलब एक आपने रन मार दिया और उसका ऊपर और एक रन मारने के टाइम पे वो बराबर फ्यूज नहीं किया तो वो भी इंटर रन लैक ऑफ फ्यूजन हो जाएगा. फिर लैक ऑफ रूट फ्यूजन. सो आपने देखा है कि रूट जिस तरह से रूट साइड है अगर वो बराबर से फ्यूज नहीं हुआ तो भी ये आ सकता है. देन लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, मैंने आपको जैसे बताया ये जो साइड है बेवल साइड है, ये बेवल साइड में जब ये वेल्डिंग कर रहा था इधर, ये इसने प्रॉपरली ये इधर उसने मेल्ट नहीं किया, ये मेल्ट नहीं किया तो ये जो एज है ये फ्यूज नहीं हुआ. अगर वो बराबर से एज को लेके वेल्डिंग करता था तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता था. सो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज लो हीट इनपुट इनटू द वेल्ड इंक्रीज द आर्क वोल्टेज. अगर वोल्टेज कम है तो वो हीट बराबर फ्यूज नहीं हो रहा है, कम फ्यूज हो रहा है, साइड वॉल बराबर फ्यूज नहीं हो रहा है आपका, सो थोड़ा करंट बढ़ाना चाहिए. सो मोल्टन मेटल फ्लडिंग अहेड ऑफ आर्क, सो ये भी हो सकता है. इम्प्रूव इलेक्ट्रोड एंगल एंड वर्क पोजिशन टू इंक्रीज द ट्रैवल स्पीड. फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड और स्केल ऑन वेल्ड प्रिपरेशन, ये जो इम्प्रॉपर क्लीनिंग का मामला है. सो इम्प्रूव एज प्रिपरेशन प्रोसीजर. सो फिटअप अगर गंदा है तो ये भी आ सकता है. एक्सेसिव इंडक्टेंस इन मैग डिप ट्रांसफर वेल्डिंग. सो एक्चुअली बिग मैग जो FCW GMAW प्रोसेस है, इसमें जो डिप ट्रांसफर मोड है इसमें अगर इंडक्टेंस ज़्यादा आता है वेल्डिंग मशीन में तो ये भी होने का चांस है. तो ये इंडक्टेंस को रिड्यूस करना चाहिए एंड देन इट विल इंक्रीज द, इवन इफ इट इंक्रीज द स्पैटर बढ़ेगा तो नो प्रॉब्लम, उसको आप निकाल सकते हैं, बट एटलीस्ट इसमें ये जो टिपिकल लैक ऑफ फ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन. इंटर रन में आप देखा होगा कि दो रन के बीच में
फ्यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, देखिए आप, पूरा का पूरा फ्यूज नहीं हुआ है. So low arc current resulting in low fluidity of weld pool increase the current. So high travel speed रहेगा तो reduce the travel speed. Inaccurate bead placement restrain the welder. कि bead बराबर से उसने मारा नहीं है तो आपको वेल्डर को बोलना चाहिए. तो ये जो भी हम लोग सीख रहे हैं इसमें बहुत डिफरेंट वैरायटी है. आपको याद कैसे रखना है ये आपको सोच के एक मेंटल मैपिंग करना चाहिए कि SMAW में ये है, टंगस्टन टिग वेल्डिंग में है, फिर ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं लैक ऑफ फ्यूजन सब में आ सकता है. तो इसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप है, क्योंकि आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा इसमें तो आपको फिर उसके हिसाब से सोच के लिखना है. तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो लंबा हो रहा है. बट वो छोड़िए आप लंबा वगैरह, शॉर्ट, आपको बस वक्त होना चाहिए ये सब के लिए प्रिपेयर करने के लिए. आई एम प्रीटी श्योर आप ये पूरा लेंथ ऑफ द वीडियो देखेगा. सो लैक ऑफ रूट फ्यूजन में यही सब होता है, बट ये रूट साइड में होता है. तो आपको अगर एक ही याद रखना चाहिए और तीनों साइड में ये लिख सकता है आप. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये तीनों इसमें कॉमन क्या है, तो वो कॉमन आप तीनों के लिए कंसिडर कर सकता है. ऐसा करके भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. सो रूट फ्यूजन में क्या होता है, वापस लो हीट इनपुट, फिर एक्सेसिव इंडक्टेंस, ये कॉमन है दोनों में, मैग और डिप ट्रांसफर में. सो MMW इलेक्ट्रोड टू लार्ज, अगर बड़ा इलेक्ट्रोड है और रूट का जो ओपनिंग है वो कम है तो नेचुरली उसमें ये प्रॉब्लम आएगा. यूज ऑफ वर्टिकल डाउन वेल्डिंग. सो जहाँ वर्टिकल डाउन और कहाँ वर्टिकल अप होना चाहिए वहाँ पे वो वैसे ही होना चाहिए. अगर आप उसको स्विच करेगा, जहाँ पे वर्टिकल डाउन मारना चाहिए अगर आप वहाँ पे वर्टिकल अप मारने को जाएगा तो शायद ये प्रॉब्लम आ सकता है, आपका पेनिट्रेशन बराबर नहीं होगा. फिर लार्ज रूट फेस, और ये रूट फेस भी बहुत ज़्यादा आ गया तो ये हो सकता है, क्योंकि रूट फेस अगर ज़्यादा लंबा है तो आपका जो इलेक्ट्रोड जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचेगा, और जहाँ तक नहीं पहुँच सकता है वहाँ पे वो ये लैक ऑफ फ्यूजन, रूट फ्यूजन बनाएगा. फिर स्मॉल रूट गैप, जो ऑलरेडी हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने डिस्कस किया ये. फिर इनकरेक्ट एंगल, इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन. इनकरेक्ट एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे वेल्डिंग प्रोसेस में, जैसे कि आप जैकेट में टिके वाई मार रहा है तो वहाँ पे जो वाई कनेक्शन वाला जॉइंट है वहाँ पे जो हील एरिया में जब वेल्डिंग करना होता है तो फिर उसमें एंगल ऑफ मैनिपुलेशन आपको ज़्यादा करना चाहिए. और ये एंगल ऑफ मैनिपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हील एरिया वेल्डिंग के लिए. मेरे को लगता है एक और वो मेरा मेथड स्टेटमेंट है, इसलिए मैं उसको अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ. तो आप देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एक्सेसिव मिसअलाइनमेंट एट द रूट. सो रूट मिसअलाइनमेंट में भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड जितना फ्यूज कर सकता है वो करेगा, और जो मिसअलाइनमेंट जो बेवल का जो रूट फेस नीचे चला गया है 1.5 mm और 2 mm, तो वो फ्यूज नहीं कर पाएगा वो, तो वो मिसअलाइनमेंट वो पूरा लैक ऑफ फ्यूजन, रूट फ्यूजन हो जाएगा आपका. चलो देखते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या मसला है. सो मैं लैक ऑफ फ्यूजन की तरह लैक ऑफ पेनिट्रेशन भी हो सकता है. सो लैक ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो सकता है या इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन. सो ये प्रॉब्लम रूट में भी आ सकता है या कहीं और भी आ सकता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बेवल है ये शायद डबल वी वाला जो बेवल है, इसमें आप देख सकते हैं रूट में एक ऐसा लाइन आया हुआ है इधर, तो ये बराबर से फ्यूज नहीं हुआ. सो एक्सेसिव थिक रूट फेस, insufficient root gap, और failure to cut back sound metal when back gouging. So back gouging अगर आपने क्लीन से नहीं किया है तो ये आ सकता है. फिर आपने अगर आपका रूट फेस बहुत बड़ा है तो ये आ सकता है. सो नेचुरली आपको दोनों टेक्निक आपको स्टडी करना चाहिए जब वेल्डिंग में बैक गाउजिंग करता है. इसीलिए मैंने बोला था कि बैक गाउजिंग के बाद आपको डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करना चाहिए, MPI करना चाहिए, तब आपको ये नज़र आएगा इजीली और आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. सो लो हीट इनपुट कम होने से क्या होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा. सो पेनिट्रेशन नहीं होगा तो ये पेनिट्रेट नहीं होगा और ये फिर ये आ जाएगा. एक्सेसिव इंडक्टेंस इन मैग डिग ट्रांसफर, वेल्डिंग पूल फ्लडिंग अहेड ऑफ द मेटल आर्क. ये मैंने सब में ऑलमोस्ट कॉमन देखा है कि वेल्ड पूल फ्लडिंग अहेड ऑफ द आर्क इज कॉमन फॉर ऑल द पेनिट्रेशन प्रॉब्लम and also the lack of fusion problem.
So use of vertical down welding ये भी कॉमन है दोनों के लिए। तो अब देखते हैं in the joint if it's not critical nature then required strength is low, area is not prone to fatigue cracking, it's possible to produce a partial penetration weld. In this case incomplete root penetration is considered part of the structure and not an imperfection. This would normally be determined by design or cone requirement. So बहुत बार क्या होता है कि हम लोग वेल्डिंग इंजीनियर जाके देखता है और बोलता है कि नहीं ये जॉइंट को हम लोग फुल पेनिट्रेशन वेल्डिंग नहीं कर सकता है और अगर ये क्रिटिकल नहीं है तो इसको पार्शियल पेनिट्रेशन में बदल देने के लिए। So welding engineer will talk to the welding. Usually this problem will be told to welding inspector but it will be coming from welding supervisor. बिकॉज वेल्डर क्या करता है पहले वेल्डिंग इंस्पेक्टर को नहीं बोलता है, वो वेल्डिंग फोरमैन को बोलेगा, फिर वेल्डिंग फोरमैन सुपरवाइजर को बोलेगा, सुपरवाइजर सीधा वेल्डिंग इंजीनियर से बात करेगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है एक जगह पे हम लोग वेल्ड को ये पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं है तो आप इसमें पार्शियल पेनिट्रेशन के लिए बात करो कि ये वेल्डिंग इंजीनियर बोलेगा ओके मैं चेक करता हूँ। वो क्या करेगा एक TQ फ्लोट करेगा, वेल्डिंग रुकवा देगा और बोलेगा इसको कैन वी कन्वर्ट दिस जॉइंट इनटू पार्शियल पेनिट्रेशन जॉइंट। So if the partial penetration joint is accepted by the client, then this can be welded in partial penetration. उसमें full penetration का जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें वहाँ पे इतना loading नहीं आएगा, fatigue का stress नहीं आएगा। So ये accept हो जाता है, फिर वो welding partial penetration में convert करता है। फिर QC inspector को इसको as built करना पड़ता है क्योंकि ये welding का joint, sorry ये drawing immediately नहीं आएगा तो उसको site में इसको as built करना चाहिए। So incomplete root penetration, let's see एक क्यों होता है। Both fusions faces, ये जो weld का ये जो root face है ये बराबर से fuse नहीं हुआ है, so not melted. When examined from the root side, you can see clearly both of the root edges are unmelted. So आप ये RT में भी दो लाइन दे सकते हैं या आपको रूट में टॉर्च डाल के देख सकता है तो आपको नजर आएगा कि ये रूट का जो फेस है ये आपको मेल्ट ही हुआ नहीं है। सो लेट्स सी अंडरकट। अंडरकट भी बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन अंडरकट है फिलेट वेल्ड में या इवन बट जॉइंट में। अगर कैपिंग रन बराबर से नहीं मारा या बहुत ज़्यादा मारा है तो अंडरकट आने का बहुत हैवी चांसेस रहता है। सो इन इरेगुलर ग्रूव एट द टो ऑफ द रन, सो इरेगुलर अगर ग्रूव रहेगा मतलब वेल्डिंग का जो ये इरेगुलर रहेगा तो आपको ये देख सकता है previously deposited weld metal due to welding characterized by depth, length and sharpness. So ये बहुत ही शार्प, ये इसमें नजर नहीं आ रहा है ये अंडरकट प्रॉपरली, पर ये साइड में होगा, ऐसे साइड में आपको लाइन नजर आएगा एक, और जहाँ पे पेरेंट मटेरियल और ये वेल्ड का जो जॉइंट है वो बराबर से फ्यूज नहीं हुआ या कम हुआ या बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा मारेगा तो भी लाइन आता है, कम मारेगा तो भी लाइन आता है। सो तीन तरह का अंडरकट है, कंटिन्यूस अंडरकट, इंटरमीडिएट अंडरकट एंड इंटर रन अंडरकट। सो अंडरकट एक्चुअली इंटर रन मतलब जॉइंट के अंदर भी आ सकता है, जो लैक ऑफ फ्यूजन ही कहलाएगा, बट ये इंटर रन अंडरकट भी बोल सकता है आप। सो लेट्स से मेल्टिंग टॉप एज ड्यू टू हाई वेल्डिंग करंट। सो यूजुअली अंडरकट से हाई करंट से जल्दी से मारने की वजह से भी होता है। सो अटेम्प्टिंग अ फिलेट वेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन विद लेग लेंथ 9 mm, सो आप देख सकते हैं पोजीशन गलत होगा तो भी ये आ सकता है। फिर एक्सेस एंड इनकरेक्ट वीविंग, अगर वीविंग बराबर नहीं होगा तो भी ये होने का हाई चांसेस है। इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल, नेचुरली वीविंग अगर गलत है तो इलेक्ट्रोड एंगल का पोजीशन भी अगर गलत है तो इलेक्ट्रोड एंगल भी गलत होगा, तो फिर नेचुरली वो टाइम पे वो आएगा। फिर इनकरेक्ट शील्डिंग गैस सिलेक्शन, सो अगर आपने FCW और JMW ये सब यूज़ किया है तो शील्डिंग गैस के वजह से आने का चांस है, बट मोस्टली ये करंट हाई के वजह से आता है। सो एक्सेस वेल्ड मेटल एक्चुअली इज, ये जो क्राउन है वेल्डिंग का, द टॉप जिसको कैपिंग बोलते हैं या क्राउन भी बोल सकता है, उसको ये अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये एक साइड से आप देख सकते हैं कि ये अंडरकट आता है, ये जो डार्क लाइन दिखाया है। और ये क्यों होता है, क्योंकि नेचुरली ये कॉन्वेक्स लेयर बनता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा आपने मोर देन द कोड अलाउड अगर आपने वेल्डिंग किया है तो नेचुरली ये आएगा। सो हाई वापस हाई एनर्जी हाई करंट यूज़ किया है, शैलो एज प्रिपरेशन बराबर नहीं है, फॉल्टी इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन,
इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड साइज, ट्रैवल स्पीड बहुत कम है, मतलब जल्दी मारा नहीं है, स्लो मारा है। इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल, एंगल भी बराबर नहीं है। और रॉन्ग पोलैरिटी, पोलैरिटी भी यूज बराबर से नहीं किया रहता है, डीसी नेगेटिव। SMAW में कैसा है, डीसी नेगेटिव डीसी पॉजिटिव रहता है। सो अब नेगेटिव में मारेगा, इलेक्ट्रोड पोलैरिटी अगर डीसी नेगेटिव है तो ये आने का चांस है, तो पोलैरिटी पॉजिटिव होना चाहिए। The term reinforcement used to designate the feature of this weld is misleading, since excess weld metal does not normally produce a stronger weld in a butt joint or in an ordinary steel. This imperfection can become a problem. Angle of the weld toe can be sharp, leading to increased stress concentration in the toe of the weld and fatigue cracking. So क्या बोलता है कि ये reinforcement का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेल्डिंग कर देगा, तो ये यूजुअली ये एक्सेस मेटल है, बट ये फायदे का नहीं है। इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज फॉर द स्ट्रेस। इनफैक्ट वहाँ पे ये जो अंडरकट बन जाता है तो वहाँ पे स्ट्रेस बन जाता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कि फिर अगर कोई फेलियर होगा तो वहीं से वो फेल हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एरिया वी हैव टू अवॉइड इन दिस। सो एक्सेस पेनिट्रेशन आप देख सकते हैं, ये जो रूट में इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन करके रखा है, यूजुअली हम लोग इसको बोलते हैं कि भजिया बना के रख दिया रूट में। सो इसी तरह ये दिख रहा है एक्सेस पेनिट्रेशन। तो ये जो रूट एक्सेस पेनिट्रेशन ये नज़र आएगा, आरटी में भी नज़र आएगा, सिर्फ आप आंखों से देखेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब बहुत हाई हीट इनपुट से मारा है, हाई करंट से। सो आर्क वोल्टेज और बिल्डिंग करंट को ठीक से मेंटेन नहीं किया है उसने। सो इनकरेक्ट वेल्ड प्रिपरेशन ये भी हो सकता है, उसके वजह से ये हुआ हो। यूज ऑफ इलेक्ट्रोड अनसुटेड टू द वेल्डिंग पोजीशन। सो 100% ऑफ द टाइम या 90% ऑफ द टाइम बड़ा इलेक्ट्रोड से अगर आपने जॉइंट मार दिया तो ये बड़ा इलेक्ट्रोड बहुत हाई करंट लेके आएगा और हाई वोल्टेज, तो ये जो जॉइंट है, जो थिकनेस और इसका जो प्रोफाइल है वो मैच नहीं करेगा उसके साथ। सो अगर आपने कहीं 2 mm का रॉड की वजह से 4 mm का रॉड यूज कर दिया तो उसमें नेचुरली ऐसा रूट में पेनिट्रेशन एक्सेस होने का चांस है। फिर वेल्डर स्किल भी मायने रखता है, वेल्डर स्किल भी इम्पोर्टेंट है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये जो जॉइंट फिलेट वेल्डिंग मारा है वो बिल्कुल ही सही मारा नहीं है, एक साइड में मारा है और एक साइड में कम फ्यूजन हुआ है। सो ये एक्चुअली बराबर से इसका लेग लेंथ आप देखेगा, एक साइड में कम है, एक साइड में उससे भी ज़्यादा है। तो लेग लेंथ में भी अगर आप चेक करेगा इधर से इधर का बीच में, तो आपको नज़र आएगा कि ये रॉन्ग एंड फॉल्टी वेल्डिंग है। सो इसको ओवरलैप बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो आया हुआ है ये कैपिंग, ये यहाँ पे ऐसा ओवरलैपिंग करके की तरह नज़र आ रहा है। सो पुअर इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन, हाई हीट इनपुट, यहाँ पे तो पूरा का पूरा टेक्निक ही गलत है। इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द वेल्ड, रॉन्ग इलेक्ट्रोड कोटिंग टाइप रिजल्टिंग इन टू हाई फ्लूइडिटी। तो ये भी हो सकता है कि आपने गलत ही इलेक्ट्रोड यूज किया हो वेल्डिंग के लिए। फिर मिसअलाइनमेंट लिखते हैं, लीनियर मिसअलाइनमेंट। लीनियर मिसअलाइनमेंट आपने ऑलरेडी देख लिया, इधर ये जॉइंट देखते ही पता चलेगा किसी को भी कि इसमें मिसअलाइनमेंट है। दो मेंबर जो बट मेंबर है इसको ऊपर नीचे लगाया हुआ है और ये वेल्डिंग किसी भी तरह मार दिया गया है, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है लीनियर मिसअलाइनमेंट में। सो इनएक्यूरेट असेंबली और प्रिपरेशन, डिस्टोर्शन फ्रॉम अदर वेल्ड्स, ये डिस्टोर्शन की वजह से भी हो सकता है ये बराबर से फिटअप ही किया नहीं हो। एक्सेसिव आउट ऑफ फ्लैटनेस इन हॉट रोल्ड प्लेट्स एंड सेक्शन। सो जो प्लेट्स है जो अगर एकदम पैरेलल नहीं रहेगा या प्लेन नहीं रहेगा, तो इसमें अगर बहुत ऐसा ऊपर नीचे रहेगा तो ये आने का चांसेस है बराबर से फिटअप नहीं किया हो तो। ये फिर एंगुलर डिस्टोर्शन है, इसका मतलब ये जो वेल्डिंग हो गया उसके बाद में ये ऊपर नीचे हो गया बिकॉज ऑफ मिसअलाइनमेंट। टू वेल्डेड पीस सच दैट सरफेस प्लेन्स आर नॉट पैरेलल एंड इंटेंडेड एंगल, ये बहुत होता है यूजुअली इंडस्ट्री में। अगर आप स्ट्रक्चरल स्टील में देखेगा तो बहुत सारा मिसअलाइनमेंट्स, एंगुलर मिसअलाइनमेंट्स होता रहता है, तो ये अवॉइड करने के लिए फिटअप सोच समझ के फिटअप करने का, फिर वेल्ड का जो सीक्वेंस है बराबर से सीक्वेंस से वेल्डिंग होना चाहिए, कितना वेल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ये सब पूरा का पूरा वेल्डिंग इंजीनियर जो साइट में रहता है उसको इन्वॉल्व होने के बाद ये मसला
प्रॉपरली सॉल्व होता है, रिजॉल्व होता है। इनकम्प्लीट फिलेट ग्रूव. So incomplete fillet groove, continuous intermittent channel in the weld surface due to insufficient deposition of weld filler metal. So naturally अगर आप बराबर से sufficiently fill नहीं करेगा तो वो insufficient filling हो जाएगा वो groove welding में. आपने यहाँ पे देखा है कि ये almost बहुत कम उसने fill किया है, जबकि ये fill होके ये crown बनना चाहिए यहाँ पे. सो इरेगुलर विड्थ आपने देखा, ये जो कैपिंग नजर आ रहा है ये पूरा लाइक अ स्नेक जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है. सो ये एक्चुअली ये जो वेल्डर का ट्रेनिंग बराबर से नहीं हुआ है, और शायद ये कोई सीवियर आर्क ब्लो हुआ होगा वेल्डिंग के टाइम पे. यूजुअली क्या होता है, इसको हम लोग ग्राइंड कर देता है पूरा और दोबारा कैपिंग मरवाता है उससे. रूट कॉन्केविटी हम लोग ने ये पहले भी देखा था, उसके कॉजेस. इसमें अगर उसने जो वेल्ड ज्योमेट्री बराबर नहीं है, बराबर इलेक्ट्रोड नहीं यूज किया है, तो रूट कॉन्केविटी आने का चांस है. सो इनसफिशिएंट आर्क पावर, इनकरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ फिटअप, एक्सेसिव बैक गैस प्रेशर और लैक ऑफ वेल्डर स्किल, और स्लैग फ्लडिंग इन द बैक बार ग्रूव. स्लैग फ्लडिंग इन द बैकिंग बार ग्रूव मतलब क्या, अगर आपने बैकिंग यूज किया है और बैकिंग के वजह से स्लैग वहाँ पे फंस गया है तो ये होने का चांस है. बट विदाउट बैकिंग रहेगा तो नेचुरली, मतलब बैकिंग मतलब क्या होता है, 2-3 टाइप का बैकिंग है. एक बैकिंग है आपका गैस, जब आप गैस को बैकिंग करके यूज करता है, जैसा कि आर्गन वेल्डिंग में होता है, स्टेनलेस स्टील में आप उसको आर्गन डालता है तो वो एक बैकिंग है. सो वहाँ पे बैकिंग आपका गैस हो गया. एक और बैकिंग है जहाँ पे आप प्लेट रखता है, ये जो रूट पास के वहाँ पे नीचे से प्लेट लगा देता है और वेल्डिंग करता है, तो वो बैकिंग हो गया. दूसरा है कि अगर आधा जॉइंट मार दिया एक वेल्डर ने रूट पास हॉट पास, और फिर एक और वेल्डर आया और वो उसको बोला तुम बचा हुआ पास मारो, तो उसके लिए भी वो बैकिंग हो जाता है कि वहाँ पे रूट ओपन नहीं है. बर्न थ्रू, ये भी एक बहुत ही कॉमन ऑकरिंग थिंग है. सो आपको जब प्लेट या पाइप देगा वो लोग, तो उसमें ये सब परफेक्शंस या डिफेक्ट होने का चांस है. तो आपको फिर इसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली मार्क करके कितना लेंथ है वो सब लिखना पड़ता है, और इसको एक्सेप्टेबल है रिजेक्टेबल है ये भी आपको लिखना पड़ता है. तो इसलिए ये चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितना आप ये चैप्टर देखेगा वेल्ड परफेक्शन इम्परफेक्शन, उतना ज़्यादा अच्छा है. मेरे पास एक और है जो वेल्ड इम्परफेक्शन दिखाता है, वो भी मैं आपको कोशिश करेगा दिखाने के लिए. जैसा कि फॉर एग्जांपल वेल्ड डिफेक्ट्स. सो ये जो वेल्ड डिफेक्ट्स है इसमें बहुत सारा वेल्ड डिफेक्ट्स है, और ये मैं आपको कभी करवाएगा तो ये भी आप लोग के लिए अच्छा प्रिपरेशन रहेगा. आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि आपको एग्जाम में प्लेट या पाइप देगा तो ये आपको ड्राइंग बना के दिखाना पड़ता है. सो आपको ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किधर स्लैग है, किधर कैपिंग अंडरकट है, कहाँ लैक ऑफ फ्यूजन है, कहाँ कैपिंग अंडरकट है जो दो रन के बीच में, और यहाँ आर्क स्ट्राइक है, पे इनकम्प्लीट फिलेट ग्रूव है. तो आप देख सकते हैं लैक ऑफ फ्यूजन हो गया, यहाँ पे लैक ऑफ फ्यूजन है, रूट फ्यूजन, लैक ऑफ रूट फ्यूजन के ये रूट साइड से ये फोटो है. फिर ये लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन है, ये कैपिंग है, ये मेन साइड से आप ये देख सकते हैं, इसके वजह से यहाँ पे अंडरकट बन गया है, पूरा एक्सेसिव अंडरकट बन गया है एक साइड में. फिर ये पोरोसिटी यहाँ पे थोड़ा जनरेट हो गया है, ये सब स्लैग है, ये जो है ना ये पीस ये सब सरफेस स्लैग है. फिर ये गैस पोरोसिटी है, एक्सेस पेनिट्रेशन है, लीनियर मिसअलाइनमेंट है, क्योंकि अब जब कैम गेज से मेजर करेगा ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा. आप देख सकते हैं ये सब आर्क स्ट्राइक है, ये सब मार्क करना बहुत जरूरी है एग्जाम में.
आप देख सकते हैं पुअर स्टार्च ड्रॉप, एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन। अब थोड़ा ये जो स्लाइड्स है इसको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, रुक के थोड़ा स्टडी करो। ये बराबर कैप मारा नहीं है, एक्सेस कैप हाइट है यहाँ पे, कुछ जगह पे फ्यूजन हुआ नहीं है बराबर से। फिर कुछ जगह पे मैकेनिकल डैमेज है, आर्क स्ट्राइक है, लैक ऑफ रूट फ्यूजन है, porosity, arc strike। That is the last one. So come back to the burn through. So usually आपको ये एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में भी आएगा कि का कॉजेस क्या है, और फिर जब आपको प्लेट या पाइप देगा आपको फिर आइडेंटिफाई भी करना है। सो इनसफिशिएंट ट्रैवल स्पीड, एक्सेसिव वेल्ड करंट, लैक ऑफ वेल्डर स्किल, एक्सेसिव ग्राइंडिंग रूट फेस एंड एक्सेसिव रूट कैप। सो ये सब की वजह से बर्न थ्रू हो रहा है। ये जो आर्क स्ट्राइक है ये बहुत ही कॉमन ऑकरेंस है। वेल्डर वेल्डिंग करने के टाइम पे आर्क स्ट्राइक डाल देता है यहाँ वहाँ। इसके वजह से क्या होता है, जो मटेरियल है डैमेज हो जाता है और फिर बाद में उसको पूरा ग्राइंड करके एमपीआई करना पड़ता है। ये प्रोसेस में वेल्ड जो प्लेट का थिकनेस है वो कम हो जाता है। सो ये सब लफड़ा हो जाता है वो प्लेट के साथ। इसलिए आर्क स्ट्राइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अवॉइड करने के लिए बोलना चाहिए। इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली वेल्डर को टूल बॉक्स टॉक कॉन्स्टेंटली उससे बात करना चाहिए और इसके बारे में एक मतलब साइट में अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। सो पुअर एक्सेस टू द वर्क, देख सकते हैं बहुत तंग वेल्डिंग रहेगा, उसको हाथ हिलाने के लिए जगह नहीं रहेगा, तो यहाँ वहाँ उसका टच हो जाता है इलेक्ट्रोड, तो वो भी एक रीजन है। मिसिंग इंसुलेशन ऑन इलेक्ट्रोड होल्डर और टॉर्च, तो उसका अगर इक्विपमेंट बराबर नहीं होगा तो बार बार ये होता रहेगा। फेलियर टू प्रोवाइड इंसुलेटेड रेस्टिंग प्लेस फॉर द इलेक्ट्रोड होल्डर और टॉर्च व्हेन नॉट इन यूज। सो अगर आप यूज नहीं कर रहा तो उधर ही रख दिया प्लेट के ऊपर, सो प्लेट और इलेक्ट्रोड और ये सब टच हो गया तो आर्क स्ट्राइक आ जाता है। लूज करंट रिटर्न क्लैंप, सो अगर आपका जो अर्थिंग क्लैंप लूज है तो वहां पे बहुत बार स्पार्क होके आर्क स्ट्राइक आ जाता है। सो एडजस्टिंग वायर फीड विदाउट आइसोलेटिंग वेल्डिंग करंट, सो आप अगर वायर फीड जो FCAW प्रोसेस में वायर फीडिंग है, अगर आपने वेल्डिंग करंट आइसोलेट करके एडजस्ट करते रहेगा तो नेचुरली इसमें भी आने का चांस है। सो वहाँ से मटेरियल वीक होगा और बार बार फेल होने का चांस है, इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इसका जो लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा ये प्लेट का। स्पैटर भी बहुत कॉमन अकरेंस है, जितना आर्क स्ट्राइक कॉमन है उतना ही स्पैटर भी कॉमन है। सो वेल्डिंग इंस्पेक्टर पहले साइट पे आता है तो उसको आर्क स्ट्राइक, स्पैटर, पोरोसिटी नजर आता है, स्लैग नजर आता है, ये सब चीज। स्पैटर, हाई आर्क करंट, लॉन्ग आर्क लेंथ, मैग्नेटिक आर्क ब्लो, फिर इनकरेक्ट सेटिंग, डैम्प इलेक्ट्रोड, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शील्डिंग गैस। सो बहुत सारा चीज से ये आ सकता है और ये कॉस्मेटिक अपीयरेंस को खराब कर सकता है। फिर दोबारा ये ग्राइंड करना पड़ता है, ये पूरा एरिया एमपीआई करना पड़ता है और फिर थिकनेस कम हो जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको अवॉइड करने का। Torn surface, surface damage due to removal of fracture of temporary welded attachments. So welded attachment निकालने का एक तरीका है, उसको 3 mm तक गैस कटिंग से कट करना चाहिए, बाद में ग्राइंड करना चाहिए। पर आप देखिएगा बहुत बार 80% ऑफ द टाइम कोई नहीं देख रहा है बोल के फैब्रिकेटर और वेल्डर क्या करेगा, वो ये जो अटैचमेंट लगाया है उसको हैमर से मारने की कोशिश करेगा। जब हैमर से मारेगा तो वो पूरा एरिया में जो वेल्ड मेटल है या तो सडनली टूट जाएगा या खड्डा कर देगा, या तो फिर वो उधर एक बहुत बुरा टोर्न सरफेस छोड़ देगा। बहुत कॉमन है होने का, इसलिए बहुत ही केयर लेना चाहिए साइट पे और बहुत ही मतलब नज़ाकत से इसको बचाना चाहिए। वेल्डर, फैब्रिकेटर सबको आपको you will have to do the constant informing them how to do it and not to do this by hammer and all that. Additional imperfection, grinding mark, chipping mark under flush
misalignment of opposites runs, temper color and visible oxide film. So ये भी बहुत कॉमन ऑकरेंस है. आप यहाँ पे देख रहे हैं रूट कुकिंग लिखा है या केकिंग लिखा है, रूट केकिंग टिक वेल्डिंग प्रोसेस. तो ये जो हुआ है इसने बराबर से इसमें पर्जिंग किया नहीं है, तो इसकी वजह से रूट काला हो गया और ऑक्साइड हो गया. सो लोकल डैमेज ड्यू टू यूज ऑफ चिजल. चिजल भी बहुत बार यूज होता है. अंडर फ्लशिंग, लैक ऑफ थिकनेस ऑफ वर्कपीस ड्यू टू एक्सेसिव ग्राइंडिंग. सो ये अंडर फ्लशिंग इसी के लिए हो रहा है क्योंकि आप ग्राइंडिंग बहुत करता है ये सब काम बराबर करने के लिए, उसके वजह से थिकनेस कम हो जाता है मटेरियल का. मिसअलाइनमेंट भी कॉमन है. मिसअलाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इसी की वजह से, क्योंकि वो जॉइंट में स्ट्रेस भी लेके आता है, बाद में डिस्टोर्शन भी होता है. So acceptance standards. Weld imperfection can seriously reduce the integrity of the weld structure prior to service of a welding joint. It is necessary to locate them using non-destructive testing examination techniques, assessing their significance and take action to avoid their reoccurrence. So ये वेल्डिंग जो वेल्डिंग इंजीनियर और नॉट ओनली वेल्डिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर ने ये जो डिजाइन किया है उसमें अगर आप वेल्डिंग के लिए उसने डिजाइन किया है वेल्ड करने के लिए, और वेल्डिंग में आप फिर ये सब डिफेक्ट्स डाल देगा तो उसका जो कैलकुलेशन है पूरा ऊपर नीचे हो जाता है. तो ये अवॉइड करने के लिए वो एनडीटी करना पड़ता है, और एनडीटी करने के लिए टाइम पे हमको रिपेयर मिलता है, तो वो रिपेयर अटेंड करने का है, उससे बचने का नहीं है. क्यों? अगर आप इससे बच के चला गया या बोलेगा कोई नहीं हो तो दूसरा जॉइंट भी मार सकता है, दूसरा जॉइंट ओके तो ये जॉइंट का नंबर उस पर डाल के वो जॉइंट पास कर सकता है, ये सब दो मेंबरी अगर किया तो बाद में ये जॉब चला जाएगा और कहीं तो एक्सीडेंट होएगा. क्योंकि ये जो भी उसमें हम लोग ने लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, लैक ऑफ पोरोसिटी ये सब डाल दिया है जॉब में, ये आगे जाके इंजीनियर का कैलकुलेशन को ऊपर नीचे करेगा और बाद में फट जाएगा, कोई मर जाएगा और आपके ऊपर आ जाएगा. तो ये एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये लाइन में आना है तो आपको एथिक्स इज अ वेरी टॉप प्रायोरिटी. ऑनेस्टी, एथिक्स आप में अंदर बहुत अच्छा प्रिंसिपल्स होना चाहिए. सच बोलना जो है वो वही रखना, क्योंकि कि कोई किसी के प्रभाव में नहीं आने का. मीन्स यू कैनॉट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स इजीली. डर नहीं होना चाहिए किसी का. सो ये जॉब में आना है तो ये सब कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है क्यूसी इंस्पेक्टर में. सो इसके बारे में उसने लिखा है थोड़ा, और आई थिंक दैट इज अ चैप्टर एंड्स हियर. मैं आपको एक वीडियो दिखाएगा ये जाने से पहले. ये हाइड्रोजन डिफ्यूजन जो मैंने आपको बोला था उसका वीडियो मुझे मिल गया. सो आई जस्ट शो दिस. ये 3 मिनट डिफरेंट कंडीशंस है. एक 60-10 है, एक 70-18 डायरेक्टली ओवन से निकाला हुआ और एक को ओवन में 24 आवर्स रखा हुआ. सो आप देख सकते हैं कैसे हाइड्रोजन में ये अभी इसमें वेल्ड होगा 1 2 3 सैंपल पे. ये वेल्डिंग हो गया. अब इसको आप आपके साइट पे भी करके देख सकते हैं. बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, सो दैट आपका फैब्रिकेटर और वेल्डर को ये नॉलेज आएगा, आइडिया आएगा इसके बाद. तो तीनों को हम लोग कोई भी मिनरल ऑयल में डाल सकता है. आप कोई भी मिनरल ऑयल चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. थिन होना चाहिए मिनरल ऑयल, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, और वो वाइट कलर का मिनरल ऑयल होना चाहिए. आप ऐसे येलो में भी डालेगा तो अच्छा है. तो आप देख सकते हैं 60-10 में ऑलरेडी बहुत सारा हाइड्रोजन एस्केप हो रहा है, गैस. ये प्रोसेस 48 आवर्स तक, 72 आवर्स तक भी चलता है. तो आप देख सकते हैं कि ये 24 कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा ये 70-18 बीच वाला सेकेंड एक्सपेरिमेंट से भी निकल रहा है, सेकेंड सैंपल से. बट 60-10 से बहुत ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि वो हाइड्रोजन रिच है इलेक्ट्रोड, whereas 70-18 इज लो हाइड्रोजन, इसलिए कम निकल रहा है. बट फिर भी निकल रहा है. आप देखिएगा आगे आगे जाके 4 आवर्स जब हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, पर आपको ये टॉर्च से देखना पड़ रहा है, नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा है. सो 25 मिनट्स होने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा ये भी आपको फिर टॉर्च से ही नज़र आ रहा है. बट 60-10 का तो नेकेड आई से नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन गैस एस्केप.
ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गैस एस्केप हो रहा है इस केस। ये अभी इंफ्रारेड लाइट से वो देख रहा है, ब्लू लाइट से आपको नजर आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। अभी हम लोग इसको 24 आवर्स के बाद देखते हैं। So use low hydrogen electrodes when specified. Store low hydrogen electrodes correctly. So मैं थैंक करता हूँ जिम स्टॉल स्मिथ को जिसने ये बनाया। So thank you very much everybody who is watching this video. So with one more chapter of CSWIP, the chapter 4, I will be soon back. So you can enjoy this chapter 3 till done so far, and you can watch it multiple times. Thank you. Goodbye.